हेलो स्टूडेंट्स, कल का हमारा लास्ट टॉपिक था अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब दो ऐसे कंडक्टर्स जिनके पोटेंशियल डिफरेंट हों, उनको जब एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज एक कंडक्टर से निकलकर दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर होने लगता है तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम न हो जाए। इस प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के प्रोसेस में चार्ज का कोई लॉस नहीं होता। मीन्स बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑलवेज सेम रहता है, बट एनर्जी का लॉस होता है। बिफोर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एनर्जी हाई होती है और आफ्टर द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एनर्जी लो होती है। तो इस टॉपिक में हम लोग को यही निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर before redistribution of charge U1 equal to half C1 V1 square. Potential energy of second conductor before redistribution of charge U2 equal to half C2 V2 square. Total energy before redistribution of charge U equal to U1 plus U2. This equal to U equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square. This is U equal to half under bracket C1 V1 square plus C2 V2 square. This is equation number 1. When we connect both conductors with a wire, charge flowing from first conductor to second, in this process, the potential energy of first conductor after the redistribution of charge U1 dash equal to half C1 V square. Here V is common potential of conductors after the redistribution of charge. Potential energy of second conductor after the redistribution of charge U2 dash equal to half C2 V square. Total energy of both conductors after the redistribution of charge U dash equal to U1 dash plus U2 dash. We find U1 dash equal to half C1 V square plus half C2 V square. Here 1 by 2 and V square will be common, then we find U dash equal to half C1 plus C2 into V square. Again put the value of V, which is common potential. We find U dash equal to half C1 plus C2 and value of V C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Put the square here. C1 plus C2 will be cancelled with the square. We find U dash equal to half C1 V1 plus C2 V2 whole square upon C1 plus C2. This is equation number 2. Loss of energy in the process of redistribution of charge delta U equal to total energy before redistribution minus total energy after redistribution. Put the values. Delta U equal to value of U from here and value of U dash from here. 1 by 2 will be common, then we find delta U equal to half under bracket C1 V1 square plus C2 V2 square minus C1 V1 plus C2 V2 whole square whole upon C1 plus C2. Again C1 plus C2 will multiply here, then we find delta U equal to half multiply C1 here, we find C1 square V1 square multiply C1 in this, we find C1 C2 V2 square, again multiply C2 in this, we find C1 C2 V1 square multiply C2 in this, we find plus C2 square V2 square minus
under bracket C1 V1 plus C2 V2 whole square whole upon C1 plus C2. Again, we find delta U equal to half. You can see factor from here to here is same. Open the bracket. We find C1 square V1 square minus C2 square V2 square minus 2 C1 C2 V1 V2 whole upon C1 plus C2. Here C1 square V1 square and minus C1 square V1 square will be cancelled out. Again C2 square V2 square minus C2 square V2 square will also be cancelled out. Then we find delta U equal to, take common C1 C2 from C1 C2 under bracket, here V1 square from here plus V2 square and from here 2 V1 V2 whole upon C1 plus C2. Then we find delta U equal to C1 C2 V1 minus V2 whole square upon 2 C1 plus C2. This is loss of energy in the process of redistribution of charge. Keep watching, keep learning.